Once upon a time, there was a girl with no corporate experience, and then she met three middle aged men with no shame and pervert like appearance. Hi, my name is Parnita, and this is my corporate horror story. I worked in a company, let's call it MC, जहाँ all these BCs worked. उनसे मिलकर समझा मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है और हर नार्सिसिस्ट का हर लफ्ज़ कैसे अंदर तक चुभता है। लीडरशिप कम टॉर्मेंट ज़्यादा था, रोज़ काम से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट का इम्तिहान था। एक की ईगो इतनी बड़ी कि माउंट एवरेस्ट भी छोटा लगा और दूसरा कामचोर। Another one was a pervert, always lurking around like a pig, such a bore. I gave my best and was the best at my job, and for that they gave me awards. लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, सबने questions किए from their nasty vocal cords. बात बस यही थी कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए था। डॉक्टर ने कहा रेस्ट करो वरना सर्जरी होगी। डायरेक्टर ने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कब तक लोगी? उसका क्वेश्चन सुन के आई वॉज स्टन्ड बट नॉट सरप्राइज्ड। अ मैन विद नो पर्सनल लाइफ, हाउ कैन ही बी नाइस? खैर, जब आया समय अप्रेजल का, टॉप परफॉर्मर एंड टॉप रेटिंग्स आई गॉट। 3000 पर मंथ इंक्रीमेंट दे के खरीद लेंगे दे थॉट। So home became the place to stay. Faked a report to keep them at bay. Manager shrugged and said, loss of pay. वापस आते ही रिज़ाइन किया in minute one because my mind, body and soul was completely done. रिमार्क्स आए कि वर्क फ्रॉम होम लेती थी, लेकिन ये नहीं बताया कि इट वॉज अ कंपनी पॉलिसी। प्रोजेक्ट के नाम पे दे कॉल्ड अस इन ऑफिस टू वर्क अंडर अ चेन स्मोकर जो करता था नॉन चमचों को अननोटिस। प्रोफेशनलिज्म का पी इन्हें नहीं आता। प्रोजेक्ट मैनेजर बुलाता है खुद को, लेकिन ऑफिस के बाहर बोल नहीं पाता। You know where I am now, at a better place, physically, mentally, and emotionally. So, if these middle aged men and their confused Chamche clan, toxicity mein I will give them 10 on 10. I pity their sad life, full of their toxic plans. May God bless them with happiness and heal whatever fuels their demons. Just keep them far away from me, away from all their shadiness, as I'm finally violent free. So this is how corporate can feel sometimes. It is very toxic and sometimes inhuman too. What I went through was 2.5 years of pure torture. I have seen disabled people coming to office just because the management have their ego intact. I have seen a lady being shouted at in front of everyone on the floor and nobody's taking her stand. But there is something we can do about it. Instead of fighting, confronting, blaming, and feeling bad, putting ourselves into depression, we always have an option to leave. And if you don't have an option to leave, just be indifferent towards them.